ओके, प्रैक्टिस करते हैं। ड्राइंग पे देखिए सिंपल यहाँ पे जो CSWA, ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो 5.1 है और यहाँ ये सॉलिड वर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें जो इसका व्यू जो है टॉप व्यू यहाँ पे उसको बनाना स्टार्ट करेंगे इसमें। एंड ये टॉप व्यू इसका यहाँ पे 108 एंड देन ये यहाँ पे 64 सिंपल सॉलिड वर्क स्क्रीन पर आते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, एंड देन टेक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टॉप प्लेन और यहाँ पे लेंगे कॉर्नर रेक्टेंगल और इसको ड्रॉ करता हूँ मैं इसमें। देन राइट क्लिक एंड स्पेसिफाई। नाउ टेक स्मार्ट डायमेंशन, उसकी जो डायमेंशन है स्पेसिफाई करेंगे 108 एंड दिस इज 64। ओके, दिस इज 64। अगेन देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर है इसमें फिलेट यहाँ गिवन है 12 रेडियस एंड देन सेम 12 रेडियस एंड 10 डायमीटर। यहाँ पे सर्कल ये ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ से लेंगे फिलेट और स्केच फिलेट एंड देन 12 radius and select this corner and this corner also. Now okay, here and take circle and from the center point draw the circle. Now specify the diameter which is 10 diameter. Okay, specify the diameter which is 10 diameter. Again now select the circle and the circle also at the relation equal. देन अगेन यहाँ पे जो चैम्फर यहाँ गिवन है वो चैम्फर है 18 का। सिंपल एंड सेलेक्ट है स्केच एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू स्केच चैम्फर एंड जो डिस्टेंस है वो 18 है यहाँ से एंड सेलेक्ट द कॉर्नर पॉइंट। नाउ वी गॉट इट द चैम्फर विच फ्रॉम 18। ओके, देन अगेन सेम यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे इसमें, जो कि इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 54 है। एंड टेक लाइन एंड ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम हियर टू दिस लाइन। नाउ अगेन स्पेसिफाई द डायमेंशन फ्रॉम हियर टू दिस इज 54। ओके, एंड फ्रॉम हियर दिस इज 35 एंगल। अगेन ओके, एंड टेक trim entities and trim these entities. Again take smart dimension and specify the dimension from here to this which is 108. Now sketch is fully defined. Okay, right click extruded boss base and boss base width यहाँ पे देखिए सेक्शन A है इसका, यहाँ पे गिवन है 4 देना है यहाँ पे and select O and enter. Now okay, ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ हो। इसका जो फ्रंट व्यू है वो ड्रॉ हो गया। देन इस पोर्शन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सिंपली देखिए जो पोर्शन है इसका मिड पोर्शन यहाँ पे गिवन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो प्लेन बन रहा है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन चाहिए सिंपल। ठीक है, कि इस प्लेन के ये यहाँ पे जो फेस है इस फेस के परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए, प्लेन चाहिए और उस पर हम इजीली ये कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो सिंपल इसके लिए हम आएंगे फीचर में और फीचर यहाँ पे रेफरेंस प्लेन एंड सेलेक्ट द प्लेन। ओके, तो फर्स्ट रेफरेंस में यहाँ पे इस एज या वर्टेक्स को यहाँ पे सेलेक्ट दिस एंड देखिए यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर है। ओके, देन अगेन सिंपल सेकंड रेफरेंस में देता हूँ यहाँ पे ये सेकंड वर्टेक्स। ओके, अभी ये जो प्लेन है सेकंड वर्टेक्स के पैरेलल है। ठीक है, ये जो फेस था सेकंड ये वाला फेस, इसके जो प्लेन आया है वो क्या है, इसके पैरेलल है। बट मुझे ये प्लेन यहाँ पे जो ओरिजिनल फेस था हमारा उसके परपेंडिकुलर चाहिए। तो सिंपल सेकंड रेफरेंस में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ परपेंडिकुलर। नाउ देखिए यहाँ पे जो प्लेन मिला है मुझे इस फेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, नाउ हमें ये चाहिए था। ओके, देन सेलेक्ट द फेस प्लेन एंड देन स्केच। ओके, और मैं यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ इसको सिंपल एंड टेक 3 arc point or you can also draw the curve. इसको यहाँ पे draw कर देता हूँ। Select it and take line and draw the line from here to this. Now, okay. Then again specify the relations and select the relation between these which is tangent. Now select this point and this point at the coincident. Again select the circle and the line with hold the control key and add the relation tangent. Now
Again, take a smart dimension, specify the dimension. This is the radius is 12. Again, the length of the line which is 14. Okay, and see from here, this is 14 and 12. Or now this angle is 112. And from here to here, this angle is 112. Okay. Now the sketch is fully defined. And इसकी जो width है, यहाँ पे देखिए जो width given है वो 4 है. तो it means ये है कि मैं यहाँ पे इसका एक offset ले लेता हूँ, यहाँ offset and offset लेंगे 4 का, ठीक है. Total sketch का लेंगे आप, then again okay. Now take line and draw this line to this, and again take line from here to. Now the sketch is fully defined. Right click, extruded space. Okay, ठीक है. देखिए यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस अप टू मुझे यहाँ पे वर्टेक्स तक करना है, ठीक है. इसको अप टू वर्टेक्स तक लेके आना है. तो सिंपली यहाँ पे ब्लाइंड एंड सेलेक्ट अप टू वर्टेक्स एंड सेलेक्ट दिस वर्टेक्स. ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगी. ठीक है, मॉडल प्रिपेयर हो गया. देन इसको चेक करेंगे. यहाँ पे सिंपल जो ओरिजिनल मॉडल है, देखिए इसमें यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, ओके, 2886 यानी 28,862, ठीक है, mm3. देन सिंपल सॉलिडवर्क में आएंगे एंड देन इवैल्यूएट एंड मास प्रॉपर्टीज. नाउ चेक हियर व्हिच इज इक्वल टू दिस 28,861 which is equal to 62. okay, near about. so मॉडल क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ हो. इसी तरह के ट्यूटोरियल को देखने के लिए सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.